Good morning, students. This is your syllabus of final exam, annual exam. There are total 10 chapters are coming. Unitary method, profit and loss, simple interest, speed, time and distance, fundamental operation, linear equation, angle, parallel line, triangle, statistics. In these chapters which I taught you, you solve that question in your fair copy and practice that question. जो हम छुड़वा देंगे उसको आप छोड़ देना, बाकी आपको सब करना है. And now today I am telling about the assignment work of these chapters. So you complete all assignment work in a small file because you have too much time. So today I am telling you about the assignment work of these chapters. So you ready for preparing your file. First chapter is unitary method and variation. There is no assignment work. Now come to the profit and loss. There are some formulas. Profit is equal to SP minus CP, loss is equal to cost price minus selling price. These are some formulas you have to note in your file. After that, you note profit percent formula and loss percent formula. That's all. Now come to the new chapter, simple interest. These are some formula. Amount is equal to principal plus interest. Interest is equal to amount minus principal. These are some formula, and some formula are given here. Interest is equal to principal into rate into time upon 100, and principal is equal to this, time is equal to this, rate is equal to this, and the short form of the formula all these. So you note only these some basic things about simple interest or in chapter simple interest. In chapter speed, time and distance, you learn these formulas. You note down these formulas. Speed is equal to this, time is equal to this, distance is equal to this, and all these things. And there are some formula which you have to note in your assignment file. In fundamental operation, there is no assignment work. Now come to the linear equation. In linear equation, you have to note down only linear equation definition. If the number of variable used in one, then the equation in one variable, and the variable say x appears in the first degree only x but not x square and x cube etc, then the equation is linear equation in x, that is the degree of equation is 1, and general form of linear equation is ax plus b is equal to cx plus d, where a, b, c and d are constants. Only you have to note in chapter linear equation. That's all. Now come to the chapter angle. Underline work you have to note with diagram. After that, right angle. One complete turn is equal to 360 degree, 1 degree is equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 second. After that, you write क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, डेफिनेशन राइट एंगल, अकाउंट एंगल. जिसके नीचे अंडरलाइन किया वही आपको नोट करना है विद फिगर. सेम इधर ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यूरो एंगल, एडजेसेंट एंगल. You have to note this also property. If the sum of the two adjacent angle is 180 degree, the outer arm of the angle are on the same line. Only red line you have to note. And linear pair, these lines you have to note in your file. जैसे linear pair होता क्या है? Two adjacent angle are said to be form a linear pair if the sum of their measure is 180 degree. After that, complementary angle, underline work with diagram, and supplementary angle, underline work with diagram. Note down all these things. Complementary angle of an angle is equal to 90 minus measure of the given angle, and supplementary angle of an angle is equal to 180 minus measure of given angle. You note down both definition of complementary and supplementary. After that you come the chapter parallel line, transversal line. ये आपको नोट करना है, अंडरलाइन वर्क, ये फिगर बनानी है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, ये आपको पूरा नोट करना है. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 विद डायग्राम. ये सब आपको नोट करना है. और ये ब्लैक वाला है, ये भी आपको सब नोट करना है. दिस
ऐसे इसमें भी सब में आपको ये नोट करना है और डायग्राम बनाना है। नाउ कम टू द चैप्टर ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको लिखनी है दिस। उसके बाद मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, ये सब लिखना है आपको, फिगर बनानी है, एटीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, अंडरलाइन वर्क और डायग्राम। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स है, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी लिखनी है, ये सब आपको लिखना है। वही रेड लाइन वाला लिखना है और जिसके नीचे अंडरलाइन है वो लिखना विद फिगर। ऐसे इधर है प्रॉपर्टी 2, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर ये सब लिखना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विद डायग्राम। ये सब डायग्राम भी आपको बनाना है। प्रॉपर्टी वो ये लिखनी है, द सम ऑफ द सी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। खाली ये लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना है। ऐसे इसमें प्रॉपर्टी 2 है, एन एंगल एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये डायग्राम बनाना है, खाली ये लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम में लिखना है ये रेड वाला, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स इन द फिगर। दिस वुड मीन दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो दिस कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये फिगर बनाना है आपको। एंड इन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो असाइनमेंट वर्क, ओनली व्हेन आई टीच यू दिस चैप्टर you have to learn some formulas. So there is no assignment work, only some chapters are assignment work like triangle, parallel line, angle, some parts of linear equation, speed, time and distance formulas, simple interest formulas, profit and loss formulas. Only some work, well I think about 10 or 12 page of assignment work. So you note down all assignment work and learn about that, because in Viva only that portion is asked in your Viva, some question which are related to this assignment work. Okay, thank you very much.